Test. Good afternoon, everyone. I welcome you all to the last session of the 53rd National Convention of Company Secretaries on the theme, Grassroot Governance, Promoting Equity and Inclusion. Ladies and gentlemen, grassroots institutions like Grama Panchayats, cooperatives, FPOs, and social enterprises are key drivers of inclusive growth in the country, fostering participatory governance, economic empowerment, and social innovation. They provide essential services and market access to underserved communities, with Grama Panchayats implementing major government schemes and cooperatives promoting collective prosperity in agriculture and allied sectors. Company secretaries play a vital role in strengthening these institutions through compliance, governance, and strategic support. This session will explore government efforts, challenges, and the role of professionals in building an equitable India. We are all set to begin the session. I now invite our learned panelists for the session, Dr. Sanjeev Joshi, IPS, DGP and ex-Joint Secretary to Government of India, Ministry of Panchayat Raj. Sir, I welcome you to the stage, please. Let me call upon Professor Dr. G.B. Reddy, Vice Chancellor, National University of Advanced Legal Studies, Newells, Kochi. Welcome you, sir. Dr. Chavi Rajwat, former Sarpanch, Village Soda Tong District, Rajasthan. Ms. Bhakti Sharma, former Sarpanch. May I request the audience to please come to the seats forward? May I request you to please come forward? Thank you. Thank you, sir. Thank you, madam. Would request C.S. Suresh Pandey, Council Member, to please welcome Dr. Sanjeev Joshi, IPS, DGP and ex-Joint Secretary to the Government of India, Ministry of Panchayat Raj, by presenting him a planter. Can we have a big round of applause, ladies and gentlemen? Dr. Sanjeev Kumar Joshi, and Cyrus University, and a PhD in Economics and Entrepreneurial Development. He held key positions such as Polish Commissioner of Calicut, ADC to the Governor of Kerala, and Director in SARC's Agriculture Banking Sector. He also led the member, Managing Committee of Kochi Chapter, to please come forward and present a planter to Professor Dr. G.B. Reddy, Vice Chancellor, Newells, Kochi. Professor G.B. Reddy is a distinguished lawyer turned academician. He is currently the Vice Chancellor of National University of Advanced Legal Studies, Newells, Kochi. He serves on several academic and legal bodies, including the state, central, national, and other prestigious institutions. He holds LLM, LLB, LLM in Constitutional Law and PhD from Osmania University with a PG Diploma in Human Rights from University of Hyderabad. He earned 4 gold medals and was the first UGC JRF qualifier in law from Osmania University. Next, let me call upon CS Rahul Sharma, Treasurer, NIRC of ICSI, to please come to the dais and welcome Dr. Chavi Rajawat, former Sarpanch,
village Soda Thong district, Rajasthan by presenting her a planter. Madam is a former Sarpanch of Soda village in Rajasthan and she's a tranquilizing reader and committed to holistic rural development, empowerment and education. An alumna of Rishi Valley University, Rishi Valley School, Mayo College Girls School, Ladies Sri Ram College and an MBA graduate from Pune, she transitioned from corporate roles at the Times of India and Airtel to Grassroots governance. Her impactful work has earned her numerous accolades, including the First Ladies National Award and recognition from Dr. APJ Abdul Kalam. Can we have a big round? A sought-after motivational speaker, she has addressed diverse audiences across government, academy, and civil societies on issues of equity, governance, and social justice. Welcome. Let me call upon CS N. Balasubramanian, former chairman SARC of ICSI. Sir, please come over to the dais and welcome Ms. Bhakti Sharma, former Sarpanch, Barkhedi Abdullah village, Bhopal district, Madhya Pradesh, by presenting her a planter. Madam is a former Sarpanch of Barkhedi Abdullah Gram Panchayat in Bhopal district, Madhya Pradesh, known for leaving a successful career in the United States to transform her village into a model Panchayat. Can we have a big round? Her leadership earned her national recognition, including being named one of the 100 most influential women in India in 2016. She currently serves as an advisor to the Sarpanch Samvad initiative, promoting civic engagement and local governance. Bhakti continues to mentor women leaders and village heads across the country. Her work emphasizes inclusive development and community empowerment. She holds an MA in political science and remains a passionate advocate for rural transformation. Her journey inspires many to pursue public service with purpose. Now I call upon CS Suresh Pandey, Council Member, Moderator, to please take over the session. Thank you. Thank you so much. A very good afternoon to all the participants present here and all the participants who have joined us online virtually. So I welcome you all in this sixth session and the most interesting session, I would say, of this national convention. So I am very pleased to welcome our distinguished guest, as it is said by the speaker. And it is my pleasure to welcome Dr. Sanjeev Parjoshi ji, who is present here, a senior IPS officer and leader known for his remarkable work in public administration. And he is currently serving as DGP and has earlier served as Joint Secretary to the Government of India, Ministry of Panchayati Raj, and it is our honor and privilege here. So I request all the participants here to please give a big round of applause once again to Dr. Parjoshi. And I request everyone to please give a big round of applause for Professor Dr. G.B. Reddy, who is Vice Chancellor of National University. And we have with us, we already know her, Ms. Bhakti Sharma, the former Sarpanch of Barkhedi Abdullah village. So thank you very much, ma'am, for being with us. And I would like to also welcome Dr. Chhabi Rajawat, the former Sarpanch of Soda village in Tong district. And she, one very important thing about her I would like to mention, she is widely admired for being India's first MBA Sarpanch. So please give a big round of applause. So I am truly delighted to welcome this wonderful panel and remarkable group of speakers who bring together experience, vision, and deep commitment for sustainability and inclusive development. Friends, it is said by Mahatma Gandhi ji, the soul of India lives in the villages, and the soul, I believe, shines brightest when governance begins at the grassroots. So where every voice counts, every citizen feels included. So as a company secretary, we are uniquely placed to contribute this vision, and our profession stands good governance, transparency and accountability through capacity building in local institutions, promoting compliances and cooperative and rural enterprises, and creating awareness about the rights and responsibilities of basically what problems we are facing at panchayat level and grassroots level. So I will not take much time, and I request from our speaker, and initially we'll start from my extreme left, from Ms. Bhakti Sharma, to give her opening remark,
and then we'll take some question from audience also, public also. So please, Bhakti ji. Yeah, thank you. जब आखिरी सेशन होता है तो कभी कभी लगता है कि अरे समय बहुत कम है, सबको घर जाना है, लंच is a big task, but I know I have very less time, say 5 minutes, but the first 30 seconds would actually be over here to thank one and all over here who has managed to be over here. So thank you so much to the Institute of Company Secretariats for having me over here. And सबसे बड़ा धन्यवाद तो धनंजय सर मैं आपको देना चाहूँगी। 4 महीने में 2 बार आपने मुझे बुलाया, तो मुझे लगता है कि आप डायमंड को कहीं ना कहीं निखार रहे हैं, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे लगता है ज़ोरदार तालियां होनी चाहिए। भले ही आखिरी सेशन है, मगर सरपंचों को CS के जो मंच है उस पर बुलाकर उनके भी विषयों को समझना, ये एक बड़ा विषय है। और जो सब यहाँ बैठे हुए हैं उनका तो तहे दिल से शुक्रिया कि आप सब लोगों ने एटलीस्ट ना वेट करा दैट यू आर सिटिंग फॉर आवर सेशन। Thank you so much to Mr. Pandey for having me over here. Thank you so much. The best crowd you will see over here. Why I'm saying that? Because I have heard Padjoshi Sahab for like n number of times and he's as amazing as anything. अक्सर मंचों पे मेरे हाथ पांव कभी कांपते नहीं हैं। मैं आने वाले 10 सेकंड आपको एक बात बताना चाहूँगी। भक्ति शर्मा को जितने भी अवार्ड्स मिले हैं, आज हिंदुस्तान के 4.25 लाख गांव, 2.5 लाख पंचायतों में अगर एक नाम जो सबसे पहले गूंजता है वो किसी और का नहीं, वो छवि रजावत जी का है, तो मुझे लगता है इनके लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। क्योंकि मेरी माँ ने मुझसे पहले ये बात कही थी कि अगर तुम्हें चुनाव लड़ना है तो छवि जी को देखिए। आप तो हम सबकी रोल मॉडल हैं छवि दीदी। ये बात अगर मैं इस मंच से करी तो कोई अतिशयोक्ति नहीं कि आज के समय में जब युवा ये सोचता है कि उसको सरपंची का चुनाव लड़ना है तो वो छवि रजावत जी की तरफ देखता है। सो थैंक यू सो मच। ये मेरा सौभाग्य कि मैं आज मंच आपके साथ साझा कर रही हूँ। एक बहुत अच्छा सर ने विषय रखा कि क्या चैलेंजेस आते हैं जब हम सरकारी इनिशिएटिव्स को क्यों नहीं पंचायतों में सही ढंग से लागू कर पाते। तो बहुत शॉर्ट में मैं आपको उसके 5-6 विषय बताऊंगी और कंपनी सेक्रेटरीज हमें किस तरीके से मदद कर सकते हैं, इसको समझने की आवश्यकता है। देखिए, सबसे पहला विषय जो आता है, आई होप एवरीबडी इज ओके विद माई स्पीक इन हिंदी मिक्स लैंग्वेज, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, या ओके। सो सबसे बड़ा विषय जो एक आता है वो ये आता है कि पंचायतों के अंदर एक फ्यूडलिस्टिक माइंडसेट है और बहुत सारे लोग जो ग्रामीण क्षेत्र में, उनको क्या लगता है, अरे ये जो पंचायतें, ये सबसे ज़्यादा जो महत्व है वो सरपंचों को देती है, रोजगार सहायक सेक्रेटरीज को देती है। तो जितने भी लोग वहाँ पर होते हैं उनको लगता है कि नहीं हमारा तो कोई रोल ऐसा है नहीं। और वो ऐसा इसलिए भी लगता है बिकॉज व्हेन द सरपंच इज सिटिंग ऑन द चेयर एंड एवरीबडी एल्स इज सिटिंग ऑन द ग्राउंड, दैट फ्यूडलिस्टिक माइंडसेट हिट्स देयर वेरी कोर कि क्या हमारे लिए कोई क्या ये हमारे लिए है ग्राम पंचायत का अधिनियम, या ये सिर्फ ये सरपंच जो है सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ है। जो लैक ऑफ रियलाइजेशन है ये यहाँ से शुरू होता है। ये एक बहुत बड़ी बाधा होती है कि क्या पंचायतों में इम्प्लीमेंटेशन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। एक दूसरी चीज़ मैं आपको बताऊं कि वहाँ पे ग्रामीण क्षेत्र के लोग बहुत सिंपल होते हैं, वो हम लोगों की तरह बहुत ज़्यादा चीज़ों में पड़ते नहीं हैं। तो वो लोगों को क्या होता है, हमेशा ऐसा लगता है वो अपने आप को बहुत कम आंकते हैं। उनको लगता है कि हम कुछ कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। वो अपने आप को उस लेवल पे ही कभी नहीं लेकर आ पाते कि नहीं ये हमारे लिए है, यहाँ की ड्यूटीज़ हमारे लिए हैं, यहाँ के राइट्स हमारे लिए हैं और हमको एज अ होल ग्राम सभा के अंदर, पंचायतों के अंदर लोगों के बारे में सोचना है। वो सोच ही उनके अंदर कभी डेवलप नहीं हो पाती है। वो ऐसा इसलिए भी है क्योंकि एजुकेशन सिस्टम, जब उनको जो टीचर्स पढ़ा रहे थे वो तो पॉलिटिकल अपॉइंटेड थे। आज के समय में एक सही प्रोसेस से निकलने वाले टीचर्स तो थे नहीं। ये लिटरेसी रेट एक इतना बड़ा समस्या है आज भी सरकारी स्कूल्स में जो ग्रामीण क्षेत्रों में है, जिसके लिए हम बार बार वेट करते हैं कि क्या एजुकेशन पॉलिसी आएगी कि नहीं आएगी और उसको सही ढंग से लागू कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। एक तीसरा बहुत बड़ा विषय यहाँ पर यह आता है कि जब हम पार्लियामेंट के अंदर देखते हैं तो पार्लियामेंट के अंदर कमिटीज़ होती हैं जिनके टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस जो हैं वो बहुत वेल डिफाइंड होते हैं। पंचायतों के अंदर ये एक बहुत बड़ी समस्या है। पंचायतों के अंदर वार्ड्स होते हैं और वहाँ पे लोग दे डोंट वांट टू कंटेस्ट इलेक्शन इन दोज वार्ड्स। तो कभी कभी
वो जो वहाँ के बड़े लोग होते हैं, जो काश्तकार होते हैं, ज़मींदार होते हैं, वो लोगों को खींच कर लेकर आते हैं कि यार तुम चुनाव लड़ लो, कम से कम सरपंची चल जाएगी। ये एक इतनी बड़ी इशू है पंचायतों के अंदर, बहुत मुश्किल से कभी उनको वार्ड के अंदर हम लोग निर्विरोध खड़ा करवाते हैं। अब उसके अंदर दूसरा प्रॉब्लम ये आता है कि वो खड़े तो हो गए हैं, बट क्योंकि वो अनमने मन से खड़े हुए हैं, तो जितनी भी कमिटीज़ हैं, चाहे आप शिक्षा के ले लीजिए, रोजगार की ले लीजिए, निर्माण की ले लीजिए, स्वच्छता की ले लीजिए, वन विभाग की ले लीजिए, सब कमेटीज़ के अंदर वो लोग नाम मात्र के लिए खड़े होते हैं, तो उसका सारा का सारा जो काम है वो फिर से सरपंच के सर पर आ जाता है, सेक्रेटरी के सर पर आ जाता है। ये एक बहुत बड़ी समस्या ग्रामीण क्षेत्रों में आती है। चौथी एक बहुत बड़ी समस्या आजकल आपको देखने को मिलेगी कि हर व्यक्ति एक कॉन्सेप्ट के साथ जा रहा है। या तो उसको लगता है कि मेरी ज़रूरत नहीं तो मैं ग्राम सभा में क्यों जाऊँ, मेरी कोई चीज़ फुलफिल नहीं होनी। अगर चलो मान भी लो वो आ भी गया, तो वो किस थॉट प्रोसेस से आता है, मैं हितग्राही हूँ, क्या मेरा सरकारी पट्टा इस बार आने वाला है, क्या मुझको इस बार शौचालय मिलने वाला है, क्या मुझको इस बार घर मिलने वाला है। वो ऐसे थॉट प्रोसेस के साथ आता है, वो हितग्राही बनकर आता है, लाभार्थी बनकर आता है। जब एक व्यक्ति अपने सेल्फिश मोटिव के साथ आएगा, दैट पर्सन इज नेवर गोना सिट ओवर देयर एंड थिंक अबाउट द पीपल एज अ होल। वो कभी भी, एक पुरुष जब आएगा तो वो कभी ये नहीं पूछेगा कि क्यों, क्या मेरी लड़कियों के लिए स्कूल की रोड कैसी है, क्या वहाँ सही ढंग से पढ़ाई हो रही है कि नहीं हो रही है, ये जो पास वाली एक बुजुर्ग महिला है, क्या इसके घर में शौचालय का पैसा आया कि नहीं आया। वो इस थॉट प्रोसेस के साथ काम ही नहीं कर रहा है वहाँ पे। एक पांचवी बहुत बड़ी समस्या ये है कि SRLM और NRLM के सेंटर्स इतनी दूर हैं, बहुत मुश्किल से तो गांव वाले अपनी 10th 11th 12th के लिए बच्चियों को एक गांव से दूसरे गांव भेज रहे हैं, और आप और मैं इसी कमरे में बैठ के ये सोच रहे हैं कि क्या लोग अपनी लड़कियों को, अपनी महिलाओं को NRLM के इंस्टीट्यूट में कोई सिलाई, कढ़ाई, बुनाई या कोई नया स्किल सीखने के लिए भेजेंगे। वी नीड टू फेस द रियलिटी। 50% आज भी ऐसी मानसिकता के लोग हैं, चाहे वो पुरुष हैं चाहे वो महिला हैं, वो चाहेंगे ही नहीं कि महिलाएं जाके कोई नया स्किल डेवलपमेंट सीख कर आए वहाँ पे। एक सबसे बड़ी समस्या जो मुझे लगता है आप लोगों को समझनी पड़ेगी वो ये है that the young generation of administrative officers who are actually now coming, they are very enthusiastic. Oh, they really want to do something for the people, for the gram panchayats and the people who are actually staying in the rural urban areas. But where the problem lies, वो जो फील्ड ऑफिसर है वो एक थॉट प्रोसेस के साथ बस ये सोचता हुआ चला हुआ आ रहा है कि क्या मुझे ये काम करना है, इसलिए क्योंकि मुझे नौकरी पेशा हूँ मैं, तो मैं अपना काम पूरा करूँ, और मैं लोगों के लिए कितना सोच पाऊँ कि नहीं सोच पाऊँ, एक ये बहुत बड़ी दिक्कत है। फाइनल सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो मुझे लगती है वो फाइनेंसेस की है। OSR डिफाइंड ही नहीं है। 15th फाइनेंस कमीशन का पैसा तो आ जाता है, मगर आज भी पंचायतें खुद के दम पे, बलबूते पे खड़ी नहीं हो पा रही हैं। वो हो भी जाती हैं तो सरकार उनको डिक्टेट करती है। वन साइज फिट्स ऑल का कॉन्सेप्ट कभी भी ग्राम पंचायतों में नहीं चल पाएगा। तो क्या हो पाएगा, आप लोगों का क्या रोल है? आने वाले 1 मिनट में आपको सिर्फ ये समझना होगा दैट यू आर द वंस हु कैन हेल्प देम आउट। बट जब हेल्प कर रहे हो तो हम ये ना सोचें कि हम उनको गाइड करने जाएंगे। अरे बैठिए कभी किसी गांव में जाके उनकी दाल बाटी चूरमा खाइए, या यहाँ पे जाके आप आराम से किसी बनाना के लीफ के ऊपर वहाँ पे इडली सांभर खाइए, रसम खाइए, उनके साथ बैठिए, उनके इश्यूज़ को समझिए। जब आप उनके इश्यूज़ को समझेंगे तो आप उनको अपने आइडियाज़ दे पाएंगे। आप लोग उनको हेल्प तो करो एक बार कि प्रस्ताव कैसे लिखा जाता है, ग्राम पंचायत की मीटिंग्स कैसे होती हैं, इन सभाओं में क्या महिलाओं को हम किस तरीके से जोड़ सकते हैं। ये आप लोग हैं जो उनको बताएंगे कि सोशल ऑडिट्स जो है उनको करना कितना इंपॉर्टेंट है 3-3 महीनों में। ये आप हैं जो उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग के प्रोग्राम्स करेंगे। ये आपका काम रहेगा कि उनको हेल्प करना कि मॉडल गवर्नेंस कोड किस तरीके से लागू होगा पंचायतों के अंदर। ये आप हैं जो उनको मीटिंग का 1-on-1 मिनट टू मिनट प्रोसीजर ऑफ द मीटिंग समझाएंगे, और आप उनको समझाएंगे कि अकाउंटेबिलिटी कैसी है। वरना बहुत सारे लोगों को हमने देखा है कि अरे वो कोई ऑडिट हो रहा है, वो 3 दिन लोग आके बैठते हैं, वो सब कुछ सिर्फ पेपरों पे होता है और ज़मीन पे असली स्तर पर कुछ नहीं होता है। अगर आप लोगों की थोड़ा सा भी अपना समय आप निकाल के ये सोचें कि हमको समाज के लिए कुछ करना है, हमको देश के लिए कुछ करना है, ये वो टाइम आएगा जब आप लोग सोचेंगे कि नहीं, दिस इज समथिंग दैट वी वांट टू डू। गो अडॉप्ट अ पंचायत, स्टे इन द विलेजेस। कोविड ने भी तो हमको यही सिखाया है। सो with such good points, I'm looking forward that there are a lot of questions on how and when and where can we actually start in doing something really good for the panchayats. Thank you so much. भारत माता की। बहुत धीरे आवाज है, क्या हो गया है? कम से कम साउथ में इतनी आवाज तो करें कि दिल्ली तक गूंजे। भारत माता की। थैंक यू सो मच। नमस्कार। Thank you so much, Bhakti ji, for such a wonderful opening remark. So now I request Professor Dr. G.B. Reddy sir, Vice Chancellor of National University of Advanced Legal Studies, Kochi.
So please give him a big round of applause. Thank you. And you know that India is one country where there is a vibrant system of local self-government. And according to an estimate, we have nearly 2,62,834 rural panchayats. Then again, including the urban bodies, it is around 2.68 lakhs. And we are talking about 780 districts, then so many sub-districts, development blocks, villages, so on and so forth. In the last session, the last speaker made a wonderful remark about the corporate governance, then leading to good governance. Now I would say the corporate governance in a professional manner should reach even the grassroots governance. And all these years, probably there has been a top-down approach more and bottom-up approach less as far as the local self-government bodies are concerned, be it the panchayats or municipalities or cantonment boards or thandas, polas, by whichever name they are called. When we are finding the solutions to some of the problems, again we have to fall back on Mahatma Gandhi. Though Mahatma Gandhi appears to be not so relevant for some, but he continues to be relevant, at least for the purpose of the Gram Swaraj and Village Republic. And he envisaged a vibrant local self-government, that is the governance at the grassroots level. And he described the village as the ideal place to live. Today, I think most of the successful persons have a home back in the village. You call it farmhouse or whatever it is, that's different. You know, high tariffs, but one solution also comes from the Gandhian thought. We are talking about organic food, and the doctors are also advising the same, and 100% literacy, so on and so forth. This is one aspect. But when you look at some of the important developments that took place just before the commencement of the Constitution, you have to look at a famous report of M. Vishweshwaraya. Way back in 1939, he came out with a grassroots level planning document, which deserves, I think, appreciation and consideration even at this level in order to strengthen the local bodies. Then we also have the constitutional framework. Of course, every day we talk about the constitutional spirit, constitutional morality, but when it comes to the villages and the grassroots level units of governance, I think the Constitution sometimes takes a backseat. Though in spite of having a clear mandate in the various provisions of the Constitution, be it the directive principles of state policy, dealing with village panchayats, then talking about the right to work, right to education, and the right to health, so on and so forth, then the revolutionization of the local self-government by virtue of 73rd and 74th amendments. Everyone knows. And today we teach our students only about the 11th and 12th schedules without actually
focusing on the decentralization at that particular level. We talk only about the center-state relations, but we don't talk about center and state on one hand and local self-government bodies on the other hand. And this is the real problem, which lies. Then we have the landscape of the governance. We have number of, instances where Gram Sabhas are totally ignored. Sarpanch madam was saying something about, in fact, empowering the Gram Sabha, empowering the village administration. But Gram Sabha's importance, which is under maybe the PISA Act or maybe under the Forest Rights Act of 2006 or even under the 73rd Amendment, came to be highlighted only because of the Supreme Court. Otherwise, it remains only on the paper. Like the, social impact assessment which is conducted or environmental impact assessment which is only on the paper most of the times. Gram Sabhas also, for a great extent, are not conducted in a professional manner, and it all required the Supreme Court's intervention in the Niyamgiri mining case, that is Orissa Mining Corporation versus Ministry of Environment and Forests in 2013. And the Supreme Court did not buy the argument of state government of Kerala saying that Gram Sabha's approval is not necessary for giving clearance to one of the Vedanta project. And Vedanta's argument was that they spent hundreds of crores of money already by that time. But the Honorable Supreme Court said, go back to Gram Sabha, try to get the approval now. So that is the real, the power and significance of the local self-government at the grassroots level. We have the PISA Act, then determination of the rights of the scheduled tribes, especially in the scheduled areas. I think we have as many as 9 states which have the scheduled areas, and 6 states rather. And in the scheduled areas, the governance is a big issue. And whether it is PISA Act or PISA Act, one of the reports which is available on the internet says that most of the local communities who are supposed to play an important role through the Gram Sabha, they are deprived of their rights. I think there is a need for strengthening it. Talking about 2 things, I'll just take 2 minutes, sir. One about the equity and the other one is about the inclusiveness. We are talking about Sarpanch Pradhans, Sarpanch Patis and all. That is a reality. I wish that everyone is as dynamic as the 2 Sarpanches or ex-Sarpanches sitting on the dais. In real life, it is only the Sarpanch Pati, maybe Sarpanch Pradhan, maybe brother, maybe father-in-law, whoever it is. And we have come across a very funny incident of even the Sarpanch Pradhans taking oath, the proxy governance, which is a reality today. And I think in 2025, the Ministry of Panchayat Raj, Government of India, has come out with 2 wonderful reports on the Sarpanch Pradhans and Sarpanch Pati syndrome. I wish that everyone reads. Then about the relevance and the role that can be played by the company secretaries. As far as the grassroots governance is concerned, there are so many things which can be done formally and informally, and whether it is promotion of capacity building, because you are professionals. The moment, they refer to professional in India, I think among the top 5, we refer to company secretaries because of their professionalism. If this kind of professionalism is introduced at the grassroots level governance, I think certainly the objective of the Constitution as well as Mahatma Gandhi could be achieved. So enhancing awareness campaigns, encouraging financial independence, inclusive governance. 21 states have more than 50% reservation for women. But in many of the Gram Panchayat, Mahila Sabhas are not conducted, leave alone the Gram Sabhas. And that's where most of them become voiceless. About the CSR activities, it's not only the CS adopting a village, but ultimately ensuring that a company adopts a village for the purpose of CSR activities as envisaged under the Section 135 of the Companies Act. The social audit, Madam has already mentioned. Then IPR initiatives.
Our villages are fertile, places where there is lot of intellectual property in the form of traditional knowledge, in the form of, in fact, maybe traditional handicrafts, handlooms, traditional medicinal practices, where there is a scope for access and benefit sharing. Lot of fact-finding missions can be conducted, and it is very much possible with the intervention of the company secretaries. So these are some of my thoughts, and in view of the time constraint, I will stop here, but I only hope that the blend of both the grassroots level governance and professionalism, which is possible through the intervention of company secretaries, can definitely bring in a great change. Thank you very much. Thank you so much, Reddy sir. And you rightly said people are returning back to their villages, and like we all know about the founder of Zoho Group, Mr. Sridhar Vembu, who have developed approximately 15 billion company and still living in Tanjavur district, Tamil Nadu. So thank you so much. Now I request Dr. Chavi Rajawat madam to kindly give her opening remark, and she deserves a huge round of applause. Please give a big round of applause to Chavi ma'am. आप सबको मेरा नमस्कार. Namaskar. Shall we just close our eyes for a few seconds? Take a deep breath and exhale. Can we do that 3 times? Let's just wake up. Close your eyes. Inhale. Hold your breath 3 seconds and let go. Thank you. Well, it's a great honor to be here, and I'd like to thank Mr. Dhananjay Shukla, Mr. Pavan. I've not met them yet, but thank you so much for inviting me here, and to ICSI. This is not the first forum that I've had the opportunity to be with all of you. There was another program held earlier where I was also a speaker, but that was an online program. And I'm really, really thrilled and honored to be sharing the stage with such eminent personalities, from Dr. Sanjeev, who I'm a big fan of, and I think most of us are, given your background, what you've done and continue to do, and the values you hold. Dr. Reddy, I think it's fantastic, from law to academia, and understanding and so beautifully and articulating and simplifying things for us. And Bhakti, thank you so much. I'm so glad you're here, and we've shared the stage at many levels. And may I just add, one of my key visions behind leaving my entrepreneurial and private sector background to moving to the village was to, because I felt our country needs more people like us to come forth in the process of nation building. I also wanted to understand where the gap lay as far as rural development is concerned, because the village that I was a sarpanch of is the village that my family hails from. It's not where I grew up, it's not where I was born. I'm an urban product, and studied in great schools and colleges across the country. But having said that, what I've noticed, from my experience in terms of from when I was born to my close connect with the village, because I studied in the south, so the semester system between north and south back in the day was different, probably it still is. So when I had vacations, I would go to Jaipur, which is home, and invariably ended up spending a lot of time in the village, where I got to interact with the village elders. And as a result of that, I have a very strong emotional connect with the village. And the village had not seen good rains for a span of 13 years, which is a huge setback, if you understand. And having lived, many of you, I'm sure, would have your relatives, etc., living in different parts of the country in various rural sectors as well. And I had hoped, my main vision was that organizations, which many of you represent, and yourselves, would see individuals like me and Bhakti as champions who could bridge the gap between the private sector or the non-government sector and the village,
as well as the government could see individuals like us, because government also has its own limitations in terms of limited manpower in the field. For example, a junior engineer, while I was the Sarpanch in 2010, the first time, I've done 2 terms, so that's given an entire decade as the leader of the panchayat. And one JN I noticed had at least 14 to 15 panchayats under him. Now, in a day for him, say, assuming that all the panchayats do have some project or the other that has been executed and is being executed, it's humanly impossible for one man to go and oversee the projects in all of those villages in a span of even a month, because there's a lot of nitty-gritties, there's a lot of calculations, there's a lot of capacity building, and so on and so forth. And as a result, they also are unable to meet the requirements that the jobs require for them to do. So that, therefore, it makes it imperative for people like you and I to come forth and help develop our nation and help our villages. And alongside, so that's been one vision which I'd hoped for, that how do we, in a collaborative manner, even if it's one village at a time, create a model in the true sense, not the checkbox, not the number game, but in reality, a holistic development, and scale it up. Because one common thing that I hear across various sections and various sectors is how do you scale given the diversity and the wide expanse that our country has. But trust you me, it's not rocket science. If managed well and professionally, something that all of you bring to the table, it is easily doable, provided we recognize that there are champions locally, as Dr. Reddy just pointed out. There's immense wisdom and immense curiosity and aspirations even amongst the youth that aspire towards a better life. And I think all of us living in the cities also understand that when we're talking about growth, it cannot be urban-centric. It has to be people give up very quickly, and our country needs more positive stories. So I'm very happy to see that there are more news channels, even if it's online, that are picking up and finding individuals who are doing amazing work across the country and bringing that story in front of us so that more people like Bhakti and I do come forward. Soon after I was elected in 2010, I think the next elections, there was a lady who left her banking job in Orissa to become a Sarpanch. I met a young gentleman from Punjab who is an engineer by degree, was studying in the UK and working there. And he came home, I happened to be in the news, and he told his mom, if she can do it, why can't I? So that is what I had hoped for, and I'm very happy that that happened. And I'm equally excited that today ICSI has taken up this topic, because it is imperative that we understand that if we want the nation to move forward, if we want growth, even within our own corporate private organizations and businesses, it is important that that development happens at scale and all across. Now, one question that's often asked of me is, you made a huge sacrifice by going back to the village. Now, I don't really entirely understand that question, because the way I see it, governance, whether it's at the boardroom or in villages, it has one common soul that really makes things work, and that is trust. But what I also find missing in our country is that trust. There's a huge deficit as far as trust is concerned, and I think that is the shift we need to make. So I think it's very interesting that the previous session and the last speaker, and I think what most of us are going to try and share with you, there is a commonality in terms of igniting the conscience and recognizing that we have a responsibility, we have a purpose that we need to understand, which goes beyond the periphery of what we are used to and where we are working. So again, coming back to the sacrifice, I personally feel that a village is not very different from an organization, from a private organization. You've got the different departments, so to speak, from finance to managing personnel to infrastructure development, and the overall growth
Panchayati Raj, FPOs, women-led self-help groups, or social enterprises for that matter, I feel are India's governance institutions, perhaps not as formal in the past as they are as of today, and that's a step forward. And they exactly mirror, in multiple ways, the corporate structure that we are familiar with shareholders replaced by villagers, with directors by elected representatives, and auditors, the community itself. Now, it's just a question of bringing that awareness, that capacity building has to be brought in exactly the same way that we would train our personnel in our organizations, the new recruits, and so on and so forth, and perhaps the way we guide and mentor our own children. What is required is patience. What is required is shedding the ego, our arrogance that we know more, and the concept of othering. It is us and them. That is not the case. We are all the same if we believe that we represent ourselves as the citizens of the same nation. And that is what we have to recognize. That's the only way forward. As already shared, India's got more than 2.6 lakh gram panchayats, which are not just administrative units. They are schools of participatory democracy. Every decision from water to education to finding livelihoods teaches citizens the meaning of a collective responsibility. The 73rd, 74th Constitutional Amendment, I feel the main vision and understanding behind it was that when the last mile becomes the first mile of governance, democracy deepens. And this is common sense. We all get that. But what are we doing to ensure that, even within our own private organizations? Can we ditch the very vertical format and move to a horizontal one so that each and every individual, from the gatekeeper to the head of the organization, carries the same values and ethics that we all wish to see? That's the only way the growth can really happen, and the same thing is applicable even in our villages. The values that sustain strong companies, transparency, ethics, and accountability, are exactly the same that sustain strong panchayats. CSR funds, ESG goals, and as well as sustainability missions can have real measurable impact when they strengthen these institutions rather than bypass them. Now, when we speak of bypassing, this is a figure that recently a former Finance Secretary of India had shared, and please pay heed. We have a population of about 1.4 plus billion people. Now, when policies are made, who do you think it's really catering to? Who is taken into account? Any guesses? We're looking at only 350 million of the 1.4 billion people. The remaining, unfortunately, are invisible. And now when we're talking about climate change, when we're talking about AI, we also have to be extremely mindful, because whenever there's a change or transition, it displaces people. And who does it displace the first? The one at the lowest level of the pyramid. So when we are thinking of organizing things better and improving things for our country, our participation, when I'm saying our, it's all of us sitting under this roof and those who are connected virtually. It is our prime responsibility that we pay heed to what could happen, which way are we going if we have these numbers flashing in front of our eyes at every single level when we are making decisions for ourselves as well as others and for our organizations. I just want for you to imagine how it would be if every corporate partnership began not with charity, but with collaboration, with the panchayat, with the FPOs, or the women's self-help groups. Examples, FPOs, if they got the right kind of support that aggregate farmers produce today could become tomorrow's agri-enterprises. Provided we are backed with ethical financing, professional governance, and market linkages. The principle of one member, one vote ensures equity, while professional management ensures efficiency. And therefore,
what I'm trying to highlight is that there really is not much of difference between where you are and where people in the rural spaces like us are. And I think that is what I recognized, and that's why work for me in the village really was no different. Because we brought in the same sort of ideas, the same sort of visions, where we spoke to the village residents saying that we have to think. When we're looking at development, when you're thinking development and demanding it, we have to think of short-term, long-term, and medium-term vision and plan accordingly. We have to think of the larger goals, and after that is provided for, then we can come to address your individual requirements, because with the common goals, all of your issues will also be addressed. And with that, we made it a very participatory form of governance, which made life beautiful and enjoyable while going through those 10 years of leading a village for me. And where there were drawbacks, or in terms of where the government was unable to provide for, is when I reached out to the private sector. And there were many individuals like yourselves and the private sector who came forth to help us. One of my greatest ideas and dreams was to have MDs and CEOs come to the village and interact with the villagers. And I'm so happy to share that we've actually had multiple MDs who came and CEOs who've been to our village. The MD of JCB, Mr. Vipin Sondhi. Many of you may have heard of him. We had Mr. Arun Nagpal, who was the CEO of Unuminda at that time. We've had the CEO of Titan, and many others like themselves who came forward. And that is what is needed. We cannot have a top-down approach. It has to be participatory, where you have to listen and co-design. That is where we will have sustainability brought into it. And I'm just going to end with a very simple example, which all of you are aware of. Dr. Kurian's vision of Amul. Now, he was the main person because of his vision, he made dairy farming one of the largest self-sustaining industries as of today in our country. Amul started as a cooperative and then joined hands with Seva, which empowered informal women workers through collective organizing. The essence of it, to take home, is that they both built billion-rupee ecosystems grounded in trust and participation, not exploitation. And that is what we need in our villages. That is what we ask of all of you and the organizations you represent and work with. The last bit that I'd like to perhaps end with, paucity of time, I can go on, as you can probably tell, is that all of you, and I don't have to reiterate it, are the best when it comes to, by virtue of training, understanding governance, ethics, and legal frameworks. Now just imagine if that skill is applied to rural India, and what is really needed. Again, for that, you need to come to the field to understand. What's most needed is the support even to the government, because what I feel, given the diversity and vastness, is that it's a little perplexed and sometimes lost at how do you manage things. And the management and that aspect is what you all bring in. One, we have to simplify laws. We have to enable transparency, which can happen if you simplify laws and simplify the formats that we have to follow that keep changing ever so often at the panchayat level with no inclination or indication or prior indication of anything new coming along. So it's just thrown in your face. The government also, given the conditions, is often reactive. We have to pause. So we need a body that can help us pause, look back, reflect on what kind of schemes and policies exist so that we can make the amends that are needed to make it more applicable to what the grassroots really needs. Along with that, record keeping, your expertise, which is something that I've noticed at the grassroots. There's no formal training to the panchayat secretary, and now we have clerical staff as well who handles NREGA, etc. And therefore, they're at a loss. Digital filing, when I was elected, prior to me, computers had come into panchayats, but nobody knew how to use them. So I trained the new clerical staff on how to use it, and that's how we kind of took it forward in terms of transparency and accountability. And also, of course, law per se, if you can simplify it, explain it to the people, what governance is all about, what the government requires, what schemes are, simplify those for all of us in the villages. Believe you me,
you will see transformation happening much faster than it is happening as of today. And basically, I'll end by saying that we need to see the village as client of conscience and not restrict yourself by looking at companies as a client of commerce. That's the only way forward towards what I feel an equitable, inclusive India can be. Grassroots governance is not a rural agenda, it is each of our agendas. It is a national imperative. When every citizen feels heard, when every household participates, when every rupee is traceable, that is when Bharat truly becomes Atmanirbhar. My vision for India is that in India, where corporate boardrooms and village chopal discussions both echo the same spirit of accountability, empathy, and inclusion. Governance is not about who rules. It's about how we take responsibility, each one of us. The future of India's growth, I believe, lies not in centralization, but in collaboration. And I'm re-emphasizing on the word collaboration, which culturally I feel is missing in our country. Collaboration between corporations and communities, between professionals and panchayats and the government, and technology and tradition. And we, again, have to be extremely mindful of that. And I just plead all of you to not just think of strengthening institutions, but it's about igniting participation, even in the urban centers, because true governance begins when people become the purpose. And for us to be humans, we have to find our purpose and let this be it. Thank you. Thank you so much, ma'am. Detailed. So now I request Dr. Sanjeev Padjoshi ji for his remark, and then we'll take some questions. Please give him a big round of applause. नमस्कार प्रिय कंपनी सचिव भाइयों बहनों, जब नियत है तो नतीजा भी अच्छा होगा। कंपनी सेक्रेटरी के जो अच्छे एक नियत के लाए हैं, मैं उनको बधाई देता हूं। और भक्ति जी, आपने गांव वालों के लिए हमारे दिल में भक्ति पैदा किया है। छवि जी, आपने गांव वालों के लिए जो गांव वालों का छवि अच्छा बढ़ाया है। और मंच में जो मिस्टर पांडे, मिस्टर रेड्डी, एक चीज़ है हम लोग समझना चाहिए, जब तक गाँव में शहर जैसा सुविधा ना हो, हमारा विकसित भारत में कुछ तो कमी है, कुछ तो कमी है। और एक चीज़ और एक समझना चाहिए कि हमारा ग्रासरूट मतलब खाली गांव वाले नहीं है, अर्बन स्लम्स हैं, अर्बन एरिया में जो बेगर्स कम्युनिटी हैं, माइग्रेंट लेबर हैं, जो थोड़ा डिसेबल्ड हैंडीकैप्ड हैं, वो भी ग्रासरूट में आते हैं। क्योंकि जब ग्रासरूट आता है तो हम खाली रूरल साइड में करते हैं, लेकिन और भी भारत प्रांत में और भी जो शेल्टरलेस भी हैं काफ़ी, क्योंकि रेलवे स्टेशन में कोई बस स्टेशन में सो रहा है, ना मकान है, घर है, कुछ उसका भी एक है। कुछ ऑर्फन्स होते हैं, जैसा कोई कैलामिटी हुआ, अर्थक्वेक हुआ, कुछ बड़ा बड़ा आते हैं उसमें ऑर्फन्स में, जैसा कोरोना टाइम में ऑर्फन्स भी कुछ हैं, वो भी ग्रासरूट में आते हैं। और ग्रासरूट का एक हमारा इंडिया में डेफिनेटली 140 करोड़ में मेरे को लगता है 20-30 करोड़ तो है ही, नो डाउट उतना लेवल पॉपुलेशन है। और एक चीज़ से मैं बताना चाहता हूँ कि हमारा एक प्रिंसिपल एजेंट का प्रॉब्लम है, क्योंकि हम लोग थोड़ा कहीं ना कहीं देखते हैं ये, क्योंकि एक दृष्टांत हुआ था अपना कर्नाटका बेंगलोर मेट्रो स्टेशन में, एक गांव वाला किसान अपने किसानों भेष में आ गया और उसको मेट्रो में चढ़ने के लिए नहीं दिया। ये सब आप पढ़े होंगे। तो हमारा एक नज़रिया एक है कि गाँव वाला कोई आए तो हम थोड़ा सा, मतलब मैं नहीं कहता हूँ कि सब लोग, बट लेकिन नॉर्मली ये स्टैंडर्ड दिखा कि थोड़ा सा नीचे होगा। मैं सबको आग्रह करूँगा कि गांव वाला आए, सबको आप बोल के आप एड्रेस करिए, तो उनको एक लगेगा कि कोई हमको इज्जत दे रहा है। दूसरी और एक बात मैं देख रहा हूँ, क्योंकि मैं भी काफ़ी दिनों से ये कोऑपरेटिव रूरल एरिया, जब यहाँ पे केरला में मिल्क फेडरेशन का मैं एमडी था, मैं 2007 में था, उसी दिन से मैं लड़ रहा हूँ कि एग्रीकल्चर लेबरर को कैसे स्किल्ड लेबर स्टेटस मिले, क्योंकि इंडिया में एग्रीकल्चरिस्ट समझते हैं तो अनस्किल्ड मानते हैं, क्योंकि थोड़ा बहुत एजुकेशन ना हो। मैं ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के सामने भी, जॉइंट सेक्रेटरी जब पंचायती राज था, मैं प्लीड किया कि सर एक चीज़ इनको स्किल्ड लेबर स्टेटस दीजिए, सो दैट उनका
और वो पूछे कि उसमें खर्चा आएगा, बोला कुछ खर्चा नहीं आएगा। और बोले किस लिए? मैं बोला आदमी नाक के लिए जीता, पेट के लिए तो जीता है ठीक है, बट नाक के लिए बहुत ज़्यादा वो मेहनत करता है, क्योंकि डिग्निटी रेस्पेक्ट बहुत जरूरी है। और वो स्किल्ड लेबर हम लोग भी कंपनी सेक्रेटरी से भी आग्रह करूंगा कि ये होना चाहिए कि स्किल्ड लेबर, अदरवाइज हार्डली एग्रीकल्चर लेबर। इसीलिए जो यूथ एजुकेटेड है एग्रीकल्चर में आना नहीं चाहते हैं, कि कोई उसको सोचता है कि वो ब्लू कलर जॉब, लो डिग्निटी जॉब, और ये बहुत बड़ा हमारा समस्या है इंडिया में। इसलिए अर्बन माइग्रेशन खूब हो रहे हैं कि गांव में रहना नहीं चाहता है। तीसरी और एक बात मैं देख रहा हूं कि आप जानते हैं गांव में हमारा खाना पैदा होता है, जो भी खाते हैं। मैं आग्रह करूंगा हम लोग को भी खाना वेस्ट करना नहीं चाहिए, उनको इज्जत देने के लिए, क्योंकि हमने मन में रहना चाहिए। थोड़ा खा नहीं पाए अलग बात, आप कैरी कर लो। मैं तो फ्लाइट में देखता हूं, मैं एयर होस्टेस भी पूछ चुका हूं, फ्लाइट में आजकल पैक्ड फूड देते हैं, लेकिन फिर भी वो घर लेने पसंद नहीं करते। वो सोचते हैं कि लो टाइप हम लोग हैं, हम लोग ले जाएं, वो अच्छा फूड है, वो ले जाने में क्या प्रॉब्लम है? किसी को खा नहीं पाए तो फ्लाइट से लेके किसी और को दे दीजिए कि परिवार में खा लेंगे, कोई और किसी को दे देंगे, लेकिन वेस्ट मत करिए, क्योंकि जो होता है उसको दोबारा रिसाइकिल नहीं करते हैं। मैं खुद देखा हूँ नोएडा में इसका रिसाइकलिंग फैक्ट्री, वो सीधा गार्बेज डालते हैं, वो वेस्ट होता है, इतना हाई क्वालिटी फूड होता है। और एक मैं देखता हूँ कि हम लोग पानी भी वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैं ये खुद ही विज्ञान में बोल चुका हूँ, दिल्ली में विज्ञान भवन कॉन्फ्रेंस में बोल चुका हूँ। हम लोग सोचते हैं कि बॉटल वाटर पिया और 10 ml छोड़ दिया। इंडिया में 20 करोड़ बॉटल पैदा होता है, और 20 करोड़ बॉटल में 10 मिलीलीटर भी छोड़ दिया, आपने सोचा कितना पानी है? और ये बहुत महंगा पानी है। ये मत सोचिए, हम लोग गाँव को बोलते हैं कि पर ड्रॉप मोर क्रॉप, उनको बोलिए पानी नुकसान मत करो, लेकिन हम लोग शहरों में जो होते हैं इतना पानी वेस्ट करते हैं, और बॉटल वाटर में बहुत ज़्यादा वेस्ट होती है, क्योंकि उसको फिल्टरिंग करना, ट्रांसपोर्टेशन, पैकेजिंग, बहुत अलग कॉस्ट डेवलप होता है। और हो सकता है कहीं पानी नहीं पाए तो कोई साइड में गर्मी टाइम में कि वो पेड़ में डाल दीजिए, तो कुछ तो कुछ इस्तेमाल होगा। ये मेरा आग्रह है। और एक आजकल जो ग्रासरूट गवर्नेंस है, हम लोग एक्चुअली सोचते हैं कि रेवड़ी बांटो, ये पॉलिटिकल पार्टीज का भी हो गया, ये हो गया, लेकिन जापान और इंडिया में भी कहावत है, किसी को मछली देना 1 दिन दोगे 2 दिन दोगे, लेकिन उसको मछली मारना सिखाओ, सो दैट वो खुद ही कर सके। गवर्नमेंट स्कीम का जो बेनिफिट है, जो दुनिया सारा स्कीम्स है, रूरल एरिया में कैसे वो गवर्नमेंट के फायदा ले और खुद आगे बढ़े, वो उसको पैर खड़ा होके। तो हम लोग सोचना चाहिए कि उसको एनेबल कैसे करें, क्यों गवर्नमेंट स्कीम का कितना बेनिफिट ले पाए और खुद कर पाए। हम लोग काफ़ी कोशिश होता है गवर्नमेंट से, लेकिन फिर भी उसका जो गैप है बहुत बड़ा गैप है, क्योंकि इंश्योरेंस पेनिट्रेशन है हमारा इंडिया में मोस्टली, इवन आयुष्मान भारत के बाद भी 42% है। पेंशन पेनिट्रेशन इन रूरल एरिया स्पेशली अर्बन स्लम्स में 11 to 12% है। आज जो बंदा, हम ही खुद नौकरी करते हैं, सब लोग करते हैं, हम लोग सोचते हैं कि रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिले, हमारा हेल्थ इंश्योरेंस कवर्ड हो कि लाइफ इंश्योरेंस कवर हो, तो गांव वाले बिना इंश्योरेंस में कैसे जी पाएंगे? आप सोचिए। ये हमारा कंपनी सेक्रेटरी में आग्रह करूंगा। और जैसा भक्ति जी ने बोला कि अडॉप्ट करने के बाद कोई पंचायत, कोई गांव अपना अपना गांव अडॉप्ट करने के बाद ये जरूर कराइए कैसे कवरेज में आए, सो दैट कोई कैलेमिटी हुआ, कोई अनसर्टेनिटी हुआ, कुछ अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ, तो उनका बिलो पॉवर्टी लाइन में दोबारा ना आ जाए। क्योंकि हेल्थ का में देखा गया 40% पीपल, कोई क्राइसिस हेल्थ का आ गया घर फैमिली में, बिलो पॉवर्टी लाइन में दोबारा चले जाते हैं, जितना भी कोशिश करें। तो ये आयुष्मान भारत है, फायदा था, लेकिन फिर भी और कुछ आगे करना है। दूसरा और एक मैं बताऊंगा कि तारीफ तो तारीफ है, तारीफ तो तारीफ है, गांव वालों का मैं तारीफ करता रहूंगा, भले वो स्वीकार करें ना करें। और खूबसूरती तो खूबसूरती है, गांव वालों का खूबसूरती है, मैं उनका पूजा करता रहूंगा, भले वो पसंद आए ना आए। और हमारा जो अभी कुछ हुआ, मैं एक थोड़ा सा कैसे, मतलब सरपंच और पंचायतों में पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी है, लेकिन डिस्क्रिमिनेशन है। अभी जैसा कुछ 15-20 स्टेट में 2 चाइल्ड टर्म रखा है, किसी का सरपंच का लेडी और पुरुष हो, 2 बच्चे ज़्यादा हो गए तो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, लेकिन वो क्राइटेरिया MP MLA को रखा नहीं। अब सोचिए कोई बाई चांस हो गया, वट एवर रीजन्स, वो तुरंत डिस्क्वालीफाई हो जाता है। और एक है मिनिमम क्वालिफिकेशन रखा, 8-10 स्टेट में क्वालिफिकेशन रखा है कि महिला हो तो 8वीं क्लास, पुरुष हो तो 10वीं क्लास, लेकिन MP MLA के है ही नहीं। अब सोचिए। फिर दूसरी बात, बिना इलेक्टेड होके भी कोई मिनिस्टर बन सकता है राज्यों में। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का प्रावधान है 6 महीना तो बन सकता है। ऐसे हुए हैं और डिफीट हो गया तो छोड़ना पड़ा, तो उस टाइम में जो ऑर्डर इशू होता है तो उसको पालन किया जाता है, क्योंकि वो ऑर्डर कैंसिल नहीं करते हैं। लेकिन यहाँ पे सब पंचायत इलेक्शन नहीं हुआ, हर सरपंच को पद छोड़ना पड़ता है। पंचायत के लिए वो प्रावधान नहीं रखा। जहाँ भी किसी स्टेट में कुछ कारण भी लिटिगेशन हुआ, कोई कोर्ट केस हुआ, कुछ हुआ, पंचायत इलेक्शन हो गया,
तो उसको हटना पड़ता है। तो ये बहुत डिफरेंस है। दूसरी बात, एमपी एमएलए को आप जानते हैं काफ़ी बड़ा सैलरी मिलता है। मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हाईलाइट कर रहा हूँ। लेकिन सरपंच को काफ़ी सोचते हैं कि वो फ्री सर्विस दें। बहुत कम स्टेट में है 3,000 5,000, कुछ कुछ साउथ स्टेट में थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन वो सोचता है फ्री सर्विस दे। वो कैसे फ्री सर्विस देगा? और अभी जैसा हो गया, पंचायत कटिंग एज इन डेवलपमेंट स्कीम्स, सारे गवर्नमेंट स्कीम्स का इम्प्लीमेंटेशन है, सरपंच ही ऑलमोस्ट फैसिलिटेट होता है, उसको इम्प्लीमेंटर होता है, कहीं ना कहीं उसको थोड़ा सा मॉनिटर करना पड़ता है, और उस लेवल में नो सैलरी, नो कुछ, और कैसे वो करेगा? तो मैं जैसा पार्लियामेंट कमेटी में मैं हाजिर होता था तो ये लोग काफ़ी क्रिटिसाइज करते हैं। ऊपर में एमपी एमएलए बोलते हैं कि सरपंच इधर कर रहा है, वो कर रहा है, पैसा मिसअप्रोप्रिएट कर रहा है। तो मैंने एक क्वेश्चन पूछा, आपको पार्लियामेंट कमेटी में नहीं पूछता हूँ क्योंकि प्रिविलेज हो जाएगा, जब चाय में आए पूछा, ये मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन नाम ले सकता हूँ, कोई बात नहीं। लेकिन उनको पूछा, जब आप जाते हैं गाँव में प्रोग्राम, आपका प्रोग्राम एमपी एमएलए कोई मिनिस्टर जाते हैं, आप सरपंच को बोलते हैं कि मेरा गाँव में ये इंतजाम करना, और आप पैसा देते हो क्या? बोला नहीं, सरपंच तो अपने रिसोर्स में करता है। नॉर्मली ये बोलता है कि हम तो एक्सपेक्ट करते हैं उससे, भाई वो भी पॉलिटिकल बंदा है, करते हैं। मैं बोला वो कहाँ से लाएगा? तो आप खुद ही नहीं देते हो और बोलते हो, फिर गाली देते हो कि सरपंच ये कह रहा, तो ऑब्वियसली वो जो खर्चा हुआ वो कई फेक बिल्स कुछ इधर करके करता है। क्योंकि सारे सरपंच ऐसा नहीं कि बड़े बड़े बिजनेसमैन है कि बड़े नौकरी वाले हैं, क्योंकि वो हो जाएगा तो वो सरपंच ही नहीं रहेगा, वो तो अर्बन एरिया में कोई अच्छा बिजनेस करेगा। तो ये हमारा एक नजरिया है, क्योंकि जो मतलब देखना चाहिए, समझना चाहिए कि उसका क्या कठिनाई है। जैसा आपने सुना होगा फिट इंडिया कैंपेन चला, तो मैंने भी कमेटी बनाया, तो ये स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री कोऑर्डिनेट कर रहा था, तो वहाँ बड़ा मीटिंग हुई कि भाई गाँव में ये दौड़ना कि कोई फुटबॉल मैच ये हुआ, तो बताया गया कि भाई ये तो करना है क्योंकि गवर्नमेंट का एक प्रायोरिटी प्रोग्राम था। तो मैंने पूछा फंड कहाँ से आएगा, ये स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री देगा क्या? बोलते नहीं, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री का पैसा नहीं है, लेकिन जो एक्टिविटी होगा स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री को वेबसाइट पर अपलोड करना है, बैनर लगाना है, इवेंट में कुछ कुछ कार्यक्रम होना चाहिए। तो मैंने उस जो ऑफिसर वहाँ पे मेन बंदा था उसको पूछा, आपने अपने गाँव में पैसा दिया क्या कराने के लिए? बोला नहीं दिया। तो मैंने बोला ये कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि सरपंच कहाँ से लाए? तो हमारा ये सबसे बड़ा प्रिंसिपल एजेंट जो मैंने फोकस किया था कि दूसरे कैसे लाएगा, कैसे करेगा, उसको समझना चाहिए और उसको बाद में करना चाहिए। इसीलिए बोलते हैं कि पहले इस्तेमाल करो, देन विश्वास करो, बाद में डिंडोरा करो। क्योंकि आप जब तक इस्तेमाल नहीं करेंगे उसको फायदा नहीं होगा, खाली डिंडोरा पीट के फायदा नहीं हो रहा है। और एक आखिरी में थोड़ा सा एक बोलूँगा, पैसा एक्ट में जो अभी 10 स्टेट है, मैं पैसा खुद ही डील कर रहा था। मैंने जब ज्वाइन किया 4 स्टेट ने रूल बनाए थे, क्योंकि इंडिया में कानून बनने के बाद उसका रूल मैंडेटरी है, जब तक रूल नहीं होगा कानून को इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। तो मैंने जब क्या 5वां गुजरात बनाया था, उसके बाद अभी 8 रूल स्टेट बना चुके हैं। फिर भी जो ट्राइबल एरिया मोस्ट पॉपुलस है, मेरा होम स्टेट उड़ीसा है और झारखंड है, अभी तक रूल नहीं बना पाए। तो ये जब तक रूल नहीं बना पाए तो होगा क्या? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में 29 सब्जेक्ट बोला गया कि आदिवासी गाँव को देना है। हमारा आदिवासी गाँव ऑलमोस्ट मे बी 1 लाख करीब होंगे और पॉपुलेशन अराउंड 8 to 10 करोड़ होंगे, और ये अभी तक रूल 2 स्टेट में बन नहीं पाया और लड़ रहे हैं कि बनाए रूल जब तक नहीं बनेगा। और क्लासिक केस जो वेदांत का केस उड़ीसा का था, क्योंकि मैं उस एरिया को बिलोंग करता हूँ, ये सुप्रीम कोर्ट ने अच्छा डिसीजन लिया कि ग्राम सभा और पंचायत का मतलब ये नहीं कि एक ही गाँव, 2-3 गाँव मिलकर भी पंचायत हो सकते हैं, लेकिन ट्राइबल एरिया में जो ग्राम सभा होता है, इवन हेमलेट हो भी उसका ग्राम सभा अलग होता है, क्योंकि एक पंचायत में 5-6 हेमलेट बन सकते हैं। और हेमलेट का जो ग्राम सभा है वो उसको एक्स्ट्रा रिकॉग्निशन दिया है, क्योंकि वो छोटे छोटे मोहल्ला टाइप रहते हैं, तो उसको एक रिकॉग्निशन दिया हुआ है। और डेफिनेटली आखिरी में आपको जो पॉपुलेशन है, मैं थोड़ा शेर शायरी करता हूँ। पूछो मत आशिक को, पूछो मत आशिक को, आशिकी लाया कहाँ से? पूछो मत आशिक को, आशिकी लाया कहाँ से? ये जरूर जिक्र करो उससे, इतना दिन तक जिक्र ना करके आपने दिल में छुपाया कैसे? आपने दिल में छुपाया कैसे? कोई नहीं पूछता हसीनों को खूबसूरत कैसे, कोई नहीं पूछता हसीनों को वो खूबसूरत कैसे, कोई नहीं पूछता कोई मोहब्बत प्यार करने वाले को मोहब्बत हुआ कैसे, कोई नहीं पूछता प्यार करने वालों को मोहब्बत हुआ कैसे। आशिक का तो दिल दरिया है, जहाँ पे भी खूबसूरत दिखी उसी तरह पानी का धारा बहता है। थैंक यू वेरी मच, नमस्कार। Thank you, sir. Let's move to the question answer session. So, because we have limited time, so I'm directly moving towards Dr. G.B. Reddy, sir. And sir, my first question from you, as grassroots governance gaining importance and preparing leaders with both competence and conscience. So,
it is becoming crucial day by day. And in context, what kind of development programs for leaders are required to promote inclusive grassroots governance, and how can professional like company secretaries contribute toward the same, sir? In fact, but during the course of my pre-presentation also, I said something about it. But this is a kind of PPP, public-private partnership, and I would say it is public-private and professional partnership which may be envisaged. And I'm sure that ICSI has number of programs wherein the professionals can hand-hold, these NGOs and others, probably, in fact, leveraging the technology, the innovation, then creating awareness about the various government schemes which are available, and the social audit and other kind of audit, and maybe ensuring that some kind of video conferencing takes place, biometric system is effectively introduced, then the frequent, in fact, interaction between the industry and the grassroots level governance, that is equally important. Because I think in Kerala itself, regarding the Maradu flats, so there was a demolition under the supervision of the Supreme Court, and initially the permission for construction was given by the local self-government body. I think it was a panchayat institution or municipality, but later on it went back, and environmental protection could be ensured that way. So there are number of ways and means, including the fact-finding missions, and hand-holding is necessary. That's what I believe. Sir, and I would like to mention here that our president and vice president with the whole council are very much working, and recently we have released our Gram Panchayat code also, Jilla Panchayat code also, and working like as a whole on ESG topic, we are giving our best. So thank you so much. And my next question is from Ms. Bhakti Sharma. So ma'am, my question is from you, ma'am. Yeah. A progressive Bharat depends on basically empowered local institution. And what structure reform do you think can enable panchayat and municipalities to operate as more transparent, inclusive and sustainable center of governance? And how your opinion, like we can contribute in this cause as a company secretary, as a company secretary profession? So kindly answer this question. So thank you so much. So when you talk about progressive Bharat, I'm very, very happy that we have spoken the word as Bharat and not India, because from where I come and where I work, they are completely two different entities. Okay, तो ग्रामीण क्षेत्र में कभी कोई इंडिया नहीं बोलेगा, कहेगा इतने भारत के हैं भैया, हम तो जो कर रहे हैं, तो आप इंडिया कहो तो उनके सर से जाएगा, कहा अंग्रेजी बाबू कछु कह रहे हैं. So and when you talk about see sustainability, inclusiveness, I'll take one extra minute क्योंकि मैंने वहाँ बड़ा कम समय लिया था. इम्पॉर्टेंट चीज़ है भैया, हमारे देश के अंदर आप समझिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि 4th सेंचुरी एडी में उस समय भारत में एनिमल स्लॉटर नहीं था, उस समय कैपिटल पनिशमेंट नहीं थी. तो जब आप और मैं इंक्लूसिवनेस की बात कर रहे हैं, तो क्या हम शहरों में गांव वालों को लेकर आने की बात कर रहे हैं, या हम ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को लेकर आने की बात करें? क्योंकि आप और मैं जिस भारत से आते हैं, वहाँ तो एनिमल्स को भी लेकर आया जाता था, वहाँ पे हम पेड़ों की बात भी करते थे. तो जब हम सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं, तो आज किसको सस्टेन करना है? आज हमें इकोलॉजी को सस्टेन करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है. हम लोगों ने इतना ज़्यादा ढिंडोरा पीट दिया है कि गांव की महिलाएं क्या करती हैं. मैं आपको बताना चाहूँगी, गांव की महिलाएं खेती करती हैं, रुपाई करती हैं, बच्चों का ख्याल रखती हैं, सिर्फ 2 चीज़ें नहीं करती. एक, वो शहर जाके बीज नहीं खरीदती, और दूसरा वो ट्रैक्टर नहीं चलाती. उसके अलावा वो सब करती हैं. तो हमको उनको इंक्लूसिव करने की आवश्यकता है, ये समझना है. अब इस इंक्लूसिवनेस में एक और बहुत बड़ी बात है, मैं आपको बताऊं. द ओनली थिंग, जब सब मुझसे पूछते थे भक्ति जी व्हाट वाज वन थिंग दैट चेंज्ड योर लाइफ, आई सेड, जब हम ग्राम सभा में हमने जब ग्राम सभा अपने गांव में करी थी, एंड देयर वर मेन, देयर वर फीमेल्स, क्योंकि हमने महिलाओं को भी कहा था भैया आना पड़ेगा गांव के अंदर. हमने उनको एनकरेज करा. पहली चीज़ जो महिलाओं ने मांगी थी, वो कहा था कि दीदी तुम पढ़ी लिखी हो, तो हम चाहते हैं कि गाँव का हर बच्चा पढ़ा लिखा हो. इसलिए पहली सड़क जो हमने बनवाई थी, वो अपने स्कूल को कनेक्ट करती थी गांव से, ना कि कोई और सड़क हमने बनाई, क्योंकि एजुकेशन इज द फर्स्ट थिंग जिसका राइट सब गांव वालों को मिलना चाहिए. तो जब हम उनको
यहाँ पे लेकर आएंगे ग्राम सभा, वो ग्राम सभा में नहीं आना चाहती तो हम महिला सभाएं करेंगे उनके लिए, हम उनके द्वार जाएंगे। इससे क्या फर्क पड़ता है कि वो हमारे पास आती है कि हम उनके पास जाते हैं। सस्टेनेबिलिटी, रेड्डी सर मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट विषय बताऊं, जब हम शहरों के आसपास की पंचायतों को देखते हैं तो ये आपके और मेरे लिए बहुत गंभीर स्थिति है। पहले तो सिर्फ शहर वाले देर से सोते थे, आजकल गांव के जो बच्चे और महिलाएं हैं वही 6-6, 7-7 बजे उठ रही हैं। इससे पहले वो 4 बजे उठा करती थी, ये बिल्कुल प्रैक्टिकल बात है। दूसरी बात, पहले हर घर में गाय होती थी, भैंस होती थी, उनके पास बकरी होती थी। आज के समय में वो खुद जाके बाहर से पैकेट का दूध लेकर आ रहे हैं। ये दूसरी गंभीर स्थिति है जिसको हमको सोचने की आवश्यकता है। तो हम उनको उनकी जिंदगी अगर ढंग से जीने देंगे और अपना शहर बनावा नहीं डालेंगे तो ही अपने आप में वो सस्टेनेबल हो जाएंगे। उसमें हमको बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी। और रही बात ट्रांसपेरेंसी की, आप लोग हमारे लिए क्या कर सकते हो? मैं बार बार कहूं, जाइए एक गांव अडॉप्ट करिए, एक वेल इंटेंशन सरपंच से मिले, यंग सरपंच से मिले, आप देखिए क्या वो एक्चुअली कुछ करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहता। वो करना चाहते उसके साथ बैठिए और पहले दिन जाके अपने को गाइड नहीं बनना। मैं बार बार ये विषय रखूंगी, पहले दिन जाएं, उनके साथ बैठें, उठें ग्राम सभाओं में और नीचे बैठें, इस पे नहीं। कुर्सी पे बैठने से तो आप बड़े साहब हो जाएंगे, वो बेचारा मंगता हो जाएगा। पहले दिन जब हम उनके साथ नीचे बैठेंगे तब उनको समझ में आएगा कि नहीं यार ये तो मेरे लिए बात कर रहा है, ये मेरे विषयों पे बात कर रहा है। तब जाके वो लोग आप पे ट्रस्ट करेंगे और धीरे धीरे करके जब आप लोग अपनी चीज़ों को, जो आपने अभी बताया कि आप लोग मॉडल गवर्नेंस कोड को इतना स्टडी भी कर रहे हैं और उसके आप कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स करना चाहते हैं, तो ऐसी स्थिति में हम उनके लिए कुछ बढ़िया और बेहतर कर पाएंगे। और इंक्लूसिव तो मुझे लगता है सब हो ही जाते हैं। कभी किसी ने सोचा था ICSI के मंच पे सरपंचों को बुलाएंगे और उनसे सलाहें लेंगे, तो ये तो कहने की बातें होती है कि कौन इंक्लूसिव है कौन नहीं है। हमें थोड़ा थोड़ा उनके लिए छोटा डोज दो, बच्चे की तरह होम्योपैथिक डोज दीजिए। आप देखिए हम पंचायतों को अपने लेवल पर लेकर आएंगे। उस लेवल पर, लेवल इन द सेंस पैसे से नहीं है, लेवल वो है जिसमें आप और हम मिल के भारत को विश्वगुरु बनाने की बात करते हैं। थैंक यू सो मच। Thank you, ma'am. Thank you. My next question is from Dr. Shabir Rajawat, ma'am. So, ma'am, grassroots institutions often struggle with compliance, governance, finance, prudence also. So, what role do you see for professionals like us in bridging this gap while keeping equity at the core level? If you would like to answer this question. Oh, I'd absolutely love to, and thank you for asking that and thinking of it. क्योंकि हमें एक अक्सर ये लगता है that that is the kind of question that is needed when we're looking at and talking of rural governance and development, and it's often missing. So thank you to ICSI and the team that's thinking of it and working towards the model code of conduct. I'd just simplify it by saying 3 things: translate, train, and simplify. When I say translate, and as Dr. Sanjeev pointed out, when he said that often there are schemes, the government has great intention, but often that information does not reach the grassroots, it does not reach the beneficiaries. So how do we simplify it? How do we make it easier for those living in rural parts further removed from cities to get access to that information and get it easily? So we also need to make it pictorial, because not everybody is literate and not everybody can really understand the ambiguity with which many of the schemes are unfortunately written. So how can we simplify it? Training in terms of capacity building, not just of the elected representatives. It's unfortunate, and again reiterating what Dr. Sanjeev said, why are we only thinking and holding the people in the villages who are working in the panchayats accountable? Who's accountable for the gaps that exist in between the administration, that is the supporting system? Unfortunately, unko bhi, a lot of their training is also a little archaic. It's not up to speed what the current requirements are. Also, information about schemes is not entirely explained to them, so they know that there's guidelines, but they don't understand that you have the freedom and flexibility within that framework to do things a little differently. And because that has not been shared with them, they get on to getting stuck with whatever their understanding of it is. So I'll cite a simple example: construction of toilets. With the previous government, it was broken between NREGA component and a component that came under the prerogative of the Jilla head or the district head, elected head, and the ACEO. It was split 4,600 through NREGA and 4,500 through the other body.
And I had gotten a mason, and we did the simple calculation with the raw material easily available. The cost of a toilet at that point of time was 11,000 something rupees. So when I spoke to the engineers at the district level, they said, we do not know how to disburse the 4,600 rupees through the NREGA because for that we have to escalate the cost of the project. And therefore, the entire district did not benefit from it. So I reached out to the ACO. I said, can you give me the 4,500 rupees under your kitty? He said, no problem. And I said, I will raise the balance through the private sector and the CSR funds and whoever is willing to contribute. And that's how we began. We also told the stakeholders, the beneficiaries, that you have to contribute, because I realized that doling things out for free, people will not always respect it. You have to get the contribution. So even if people did not have money, I said, you get your people, your family, and even if it means digging a pit, we need you to dig the pit, and whatever else support you need, from providing the mason, providing you cheaper materials, etc., we'll provide you. And the panchayat bought everything in bulk, so the cost of the construction of toilet reduced further. We knew exactly how many bricks, etc. were needed. I'm not going to go into the detail, but that's how we progressed. But what I'm pointing out and citing is that even the government engineers often, or the people in the administrative role at the district and the block level, often are not familiar, and there's no capacity building even for them. And that is where I think all of you can play such a huge role in creating that understanding. Besides that, starting young. Our youth are the real champions in our villages. But who is educating them? Who is imparting knowledge to them? So the expertise that you have, can we bring it to the high school students so they understand what true governance and participatory governance and what their responsibility towards their nation, towards their village actually is, and teach them entrepreneurship and so on and so forth, and skill building starting at middle school and upwards, which also, if some of you would have read, was the vision that Gandhiji had when he spoke of Atmanirbharta and Gram Swaraj. Again, the other thing that corporate sector can contribute is towards creating the skilled workforce. Corporations, institutions, I keep hearing, are always disheartened because they feel like they do not have the skilled labor, they do not have the skilled workforce. And it can be a complete win-win if we can join hands and collaborate and create those. And alongside, I would request and plead you to look beyond the statutory compliance and the statutory obligation that often organizations get stuck with. Because of that, it is very skewed deployment of CSR funds. Therefore, only certain regions benefit, but those far removed from cities like my village and many other villages, they do not get to benefit. We do not have access to internet. So while the government has gone digital, which is fantastic, because digital technology is something that does not discriminate, and that's the only way forward. But are we providing the capacity building for the people using those gadgets and those platforms to really understand how it is to be used? So for example, mapping of the lands and giving rural space, because the maximum conflict resolution that a sarpanch or the elected team has to deal with is issues over land, of people encroaching into others, into common spaces, and so on and so forth. So the amazing schemes and the projects the current government has brought in the form of digital space is just absolutely fantastic. But we need people to help people to understand the benefits of it and how to use it and not be afraid of it. What Dr. Sanjib also pointed out was, simple thing is for us to first understand what kind of honorariums sarpanches and panchayat secretaries who are government employees get. It is a huge, it is a very skewed form of support, or rather, lack of a better word. Now, every state, it's a state subject, so it varies. Now, in my panchayat, when I was first elected, it was 3,500 rupees honorarium for the sarpanch, for the elected representatives. And this is important. So we get a sitting fee. You have 2 meetings in the panchayat per month. If you do attend it, then you get 75 rupees. So that's 150 rupees per month. Now please tell me, for someone who does not have the wherewithal to, as a bread earner, to bring money and food to the table to his or her family, how do you expect that individual to spend time in
towards the development of the village. So how do we make this? How do we get the government to recognize the fact that there is a minimum that is required, especially if you're expecting people to give up their rosy roti and whatever mediums may be, and look towards developing the village. I also call it the reason why at that level it is forced corruption, because you're not even taking care of the basics. And the panchayat secretary on an average gets a salary of to the tune of 70,000 and more, depending on how many years he or she has been in service. And of course, other factions come into play. Yes. So how do we change that? So these are very, very simple things that I would request all of you to look at. And just with that, and capacity building at all levels, within the government as well as the grassroots, I think that would be instrumental, and involving the youth. Yes. That's the best way to pay it forward. Thank you so much, ma'am. So this is the last question I would like to ask from Dr. Sanjeev Patjoshi ji. Sir, cooperatives, farmer producer organizations and social enterprises, and we as a company secretaries are playing a vital role in FPOs and other cooperatives. So these institutions are instruments are driving inclusive growth. And how do you see them bringing change India's diverse social economy landscape? I think that is very important, and government has also thinking to put more and more effort to develop FPOs in rural areas. So kindly answer this question, sir. दोबारा मैं बोलना चाहूँगा कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जब गवर्नमेंट में आए, प्राइम मिनिस्टर बने, उनका एक पहला था कि रिफॉर्म, परफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म। रिफॉर्म मतलब कानून चेंज होना, सिस्टम चेंज होना, और परफॉर्म मतलब जो ब्यूरोक्रेसी है, जो डिलीवरी एजेंट्स हैं, उनको परफॉर्म करना है। और ट्रांसफॉर्म का उनका मतलब है जन भागीदारी, कैसे पीपल्स पार्टिसिपेशन खूब हो, सो दे स्केल अप हो। और इंडिया में अभी भी स्केल अप काफ़ी आइलैंड्स हैं, जैसा भक्ति जी हैं, छवि हैं, पूरा वो हर पंचायत में वो लेवल का स्केल अप नहीं हो पा रहा है। और उसका कारण, बहुत कारण है, क्योंकि हमारा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, इवन आर्गुमेंटेटिव इंडियंस, अमित सेन बोला, हम लोग काफ़ी टांग भी खींचते हैं, ये भी होता है, वो थोड़ा वो तो सोसाइटी में होता रहता है, वो कोई बात नहीं। लेकिन जो आपने बोला कोऑपरेटिव्स, एक्चुअली कोऑपरेटिव्स, मैं कोऑपरेटिव फील्ड में काफ़ी 7-8 साल रहा। कोऑपरेटिव में एक बड़ा फेनोमेना है, एलिट कैप्चर बोलते हैं। आपने एलिट कैप्चर, जो थोड़ा सा इन्फ्लुएंशियल है, कि पॉलिटिकली स्ट्रांग है, कि मनी पावर्ड है, वो कैसे सिस्टम को बाईपास करके उसमें पोस्ट में रहता है, ये बड़ा फेनोमेना है एलिट कैप्चर का। और ये मैं कोऑपरेटिव में भी देखा हूँ, मिल्क कोऑपरेटिव में सब में रहता है। उसको कैसे करें, वो एक सिस्टम आजकल क्या हुआ है, टेन्योर, 2 टेन्योर की 3 टेन्योर हुआ, उसका इलेक्शन होना है, और दुनिया तरीके से वो एबोलिश करना कोशिश करता है, लेकिन फिर भी होता रहता है। ये एक है सिस्टम है, लेकिन हो नहीं पा रहा है कंप्लीट। और एक्चुअली कोऑपरेटिव फंक्शन नहीं होने के कारण जितना भी ये अपना स्कैम हो रहे हैं कुछ गाँव में, जैसा वेस्ट बंगाल में शारदा स्कैम, ये स्कैम, कोऑपरेटिव वहाँ पे सोसाइटी फाइनेंशियल अच्छा काम करते तो लोग वहीं पे विश्वास कर वहीं पैसा रखते, वहाँ पे नहीं था बोल के ये जो प्राइवेट सिस्टम में आ गए, और बाद में वो बड़ा स्कैम बना। एक्चुअली कोऑपरेटिव को हम सशक्त करना चाहिए। कोऑपरेटिव सारे फील्ड में है, हाउसिंग में है, बैंकिंग में है, इवन मिल्क में है, इवन एग्रीकल्चर में है, दुनिया भर। फर्टिलाइजर तो है ही, डोमिनेंट प्लेयर इन फर्टिलाइजर इज कोऑपरेटिव, कह दो तो कोऑपरेटिव बहुत स्ट्रांग है। और एक है जो आपने बोले एसएचजी, ये एसएचजी को फोकस किया था कि वुमेन मोस्टली ओरिएंटेड, क्योंकि देखा गया कि एसएचजी लोन देना, दे आर नॉट डिफॉल्टर्स। जनरली जेंडर का एक हम लोग डिस्क्रिमिनेट करते हैं, लेकिन ये अप्रिशिएटिव बात है कि जो औरतें लोन लेते हैं रिपे करते हैं, मर्दों को देखा गया वो डिफॉल्ट कर देते हैं, कुछ रिपे नहीं करते, तो इसीलिए मोस्टली लेडीज ओरिएंटेड हुआ। लेकिन उसमें थोड़ा फिर पॉलिटिक्स आ गया। मैं केरला में रहा हूँ, यहाँ पे एसएचजी लोग डरते हैं क्योंकि सच बता रहा हूँ, यहाँ पे एसएचजी कोई रेस्टोरेंट का मैनेजमेंट दे दिया तो खाली नहीं करेंगे। यहाँ पे मेरा खुद ही एक्सपीरियंस, जब मिल्क फेडरेशन एमडी था, ये कोचीन में ही एक कैंटीन दिया था एसएचजी को, लेडी एसएचजी, माइक थोड़ा पास, उसको खाली कर नहीं पाए, कोर्ट में ऑर्डर आ गया, हमको भी खुद बैन कर दिया कि हम जा नहीं पाए उसको, ये हालत हुई थी। तो पॉलिटिक्स नहीं आना चाहिए एसएचजी में। और एपीओ का एक बहुत अच्छा है कि फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि जो फार्मर ग्रुप होके करता है, बार्गेनिंग पावर होता है। अभी देखिए नासिक में बवाल मचा हुआ है प्याज लहसुन का और ये प्राइस का जो क्रैश है, बिकॉज जब तक ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूशनलाइज नहीं करेंगे, ऑर्गेनाइज नहीं होंगे, मार्केट में उसको वैल्यू नहीं मिलता। ये हर जगह देखा गया कि पैडी हुआ, राइस हुआ, कि कोई भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स है, जब तक आप ऑर्गेनाइज लेवल में बार्गेन नहीं कर पाएंगे, ये एपीओ का मतलब है कि बार्गेनिंग हो, मिल्क में वो कोई भी हो। और एक मैं कहूँगा, हमारा इंडिया में उदाहरण से बताऊँगा,
डिक्लेरेशन है, और एक है जो हमारा इंडिया में, और एक है, कहता हूं कोई भी होता है बिल्डिंग बना दो, वो बना दो, उसके बाद बिल्डिंग में कुछ नहीं है तो फायदा क्या हुआ? क्योंकि कहीं ना कहीं एंड टू एंड हमारे जो सर्विस प्रोवाइडिंग होना चाहिए, और ये खाली जस्ट बिल्डिंग बनाने से नहीं हो पा रहा है। ये ऐसी स्कीम आ रहे हैं खाली बिल्डिंग बना दो, उसके बाद ना मेंटेनेंस फंड होता है। ये रोड का भी समस्या है। प्राइम मिनिस्टर ग्रामीण सड़क योजना में मैं खुद ही करता था, उसमें मेंटेनेंस फंड नहीं होते हैं, खाली बनाने का फंड होता है। तो ये प्रॉब्लम होगी, उसको कैसे मेंटेन करें, क्योंकि कहीं ना कहीं तो उसको मेंटेन करना ही है। Correct, तो sir. ये हम लोग समझना चाहिए, और उस तरह का लीस्ट सोल्यूशन मैक्सिमम इम्पैक्ट को समझना चाहिए। थैंक यू। Thank you so much, sir. Thank you very much. And due to paucity of time, we need to conclude the session. And on behalf of ICSI and all the participants present here, all the participants who are attending this convocation from this conference from virtual mode, I would like to express my gratitude of thanks to all the panelists present here, and thanks to all the participants who are sitting in the last session also, and it was very interesting session, and we have learned a lot. And you can ask some questions over the lunch, because I have received the list to conclude the session, because actually, sir, many participants have to catch their flights also. They are not locally from Kochi. So we can ask question over the lunch. Our panelists are available with us. So thank you so much, everyone. Thank you. And please give a big round of applause for all the panelists. Thank you so much. Thank you. Thank you, sir. Thank you, madam. We express our sincere gratitude to each of the panelists for sharing your valuable expertise and thoughtful insights. A heartfelt thank you for all the panelists once again. Let's continue to champion equity, amplify marginalized voices, and build governance models that are truly inclusive and representative. Thank you, Suresh Mandeji, for the wonderful moderation. Going ahead, may I now invite CS J&K, former chairman, Kochi chapter of ICSI, to step forward onto the dais and present a token of appreciation, a memento to our distinguished panelist, Dr. Sanjeev Joshi, in honor of his inspiring contribution for the session. CS J&K, former chairman, Kochi chapter, presenting a memento to Dr. Sanjeev Joshi, IPS, DGP and ex-joint secretary to the Government of India, Ministry of Panchayati Raj. Thank you. May I call upon CS Midun B. Shenoy, former chairman, Kochi chapter of ICSI, to kindly ascend to the dais and present a memento to our esteemed panelist, Professor Dr. G.B. Reddy, as a gesture of our gratitude for the insightful and impactful contribution for the session. Let's have a big round, ladies and gentlemen. CS Midun B. Shenoy, former chairman, Kochi chapter, presenting a memento to Professor Dr. G.B. Reddy, Vice Chancellor, National University of Advanced Legal Studies, New Alls, Kochi. Ladies and gentlemen, let me call upon CS Baiju T, former chairman, Kochi chapter of ICSI, to kindly ascend to the dais and present a memento to our distinguished panelist, Dr. Chavi Rajawat. This token of appreciation is a humble gesture to acknowledge and celebrate the invaluable insights and contributions shared during today's session. We are truly grateful, ma'am, for their presence and the depth they brought to the dialogues. CS Baiju T, former chairman, Kochi chapter of ICSI, presenting a memento to Dr. Chavi Rajawat, former Sarpanch, Village Soda, Town District, Rajasthan. May I now call upon CS Arun Kamalol Bhavan, former chairman, Kochi chapter of ICSI, to come out to the dais and do the honors of presenting a memento to our distinguished panelists, Ms. Bhakti Sharma, a gesture of appreciation for the valuable insights and expertise Madam has shared us with today. CS Arun Kamalol Bhavan, former chairman, Kochi chapter of ICSI, presenting a memento to Ms. Bhakti Sharma, former Sarpanch, Barkhedi Abdullah Village, Bhopal District, Madhya Pradesh. Thank you. Can we have a big round for the panelists once again? Ladies and gentlemen, thank you.
Ladies and gentlemen, as we approach the final moments of this remarkable program, let us take a moment to reflect on the journey we have portioned. We began with a grand inaugural that set the tone for the day, filled with purpose and inspiration. The energy in the room was palpable, and the vision shared by our dignitaries laid a foundation for conversations that followed. We celebrated the spirit of Kerala, its rich culture, vibrant traditions, and the spirit of its people. And what better place to host such a celebration than the beautiful city of Kochi? Let's have a big round. Our panel discussions brought together brilliant minds and bold voices, from grassroots governance to inclusive development. Each session sparked dialogue, challenged perspectives, and offered fresh insights. The special sessions added further depth, spotlighting innovation, leadership, and community-driven change. As we close, let us carry forward the ideas, the inspiration, and the spirit of collaboration that today has gifted us. Let's continue to build and include and to lead with purpose and pride. From being knee-high to a grasshopper in the profession to now knowing their onions with precision, company secretaries have walked through the corridor of opportunity with confidence. The immense participation in the convention has truly put us on cloud nine, and insights shared have been a real shot in the arm for governance community. Ladies and gentlemen, it's been an absolute pleasure being your hosts, your anchors for the 53rd National Convention of Company Secretaries. We hope that you enjoyed every moment as we did, bringing it to you. We, CS Premjit, CS Disha Kant, and CS Manjusha Menon, signing off from the floor with gratitude and smile. Thank you. Thank you for being with us. Now, ladies and gentlemen, we formally request CS Ashish Mon, Secretary, to propose the vote of thanks. Thank you. Thank you.